Assalamu alaikum, my dear students. In our last video I gave you introduction about life processes. What are life processes? The basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth. All living organisms, they perform these functions to live on this earth, or we can say to sustain their life on this earth. Now energy is needed for these life processes. All organisms, they need energy to perform different life processes. Why? From that energy comes, that energy organism obtains from food. They get their energy from food. Food is a kind of fuel which provides energy to all living organisms. This means living organisms, they need food to perform different functions. Thus, why from that food comes, how organism obtains energy from that food. This is the first process that an organism performs, that is nutrition. Thus, dear students, today we will discuss what is nutrition. What is nutrition? Nutrition, you remember, nutrition is simply process of taking in food, or we can say consuming food and utilizing it किस लिए? To obtain energy. That is what is nutrition. Nutrition, you can remember, it is simply taking enough food by an organism and utilizing it to perform various metabolic activities. It is the process in which food is obtained in order to utilize it to provide energy for performing various metabolic activities of the organism. This means the food that an organism obtains, that are known as nutrients. What are nutrients? Nutrients, you can say nutrients are organic or inorganic substances required for maintenance and survival of living organisms. Organic or inorganic means, organic means living and inorganic means non-living. This means nutrients जो बेटा होते हैं, they are living as well as non-living substances that are required for maintenance, for survival and for survival of living organisms. And these nutrients, or we can say food, ये एक organism कहाँ से लाता है? That food, an organism that obtains it from its surroundings. Got it? And the food that an organism needs, that it obtains from its surroundings. And it can be the source of these nutrients, of source of energy for an organism. An organism obtains energy from these nutrients. An organism uses these nutrients, or we can say these nutrients are used by an organism for the biosynthesis of its body constituents like tissues and organs. For example, nutrients आप बोल सकते, carbohydrates जो हम खाते हैं, fats खाते, vitamins, minerals, proteins, these are all known as nutrients. Thus, you can also say nutrition is process of intake of nutrients. Thus, बेटा हम बोल सकते हैं जो nutrition process है वो हम बोल सकते हैं ये भी कि ये क्या है? It is simply intake of nutrients. Nutrients में क्या क्या आते हैं? Carbohydrates आते हैं, fats आते हैं, proteins आते हैं, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, वाटर आता है इसमें बाय एन ऑर्गेनिज्म. एन ऑर्गेनिज्म टेक्स दीज न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिज्म फिर क्या करता है? इनकी यूटिलाइजेशन करता है. किस लिए? टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और वी कैन से टू गेट एनर्जी फॉर सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ. ठीक है बेटा, दिस इज व्हाट इज न्यूट्रिशन. नाउ हम देखेंगे कि जो ये न्यूट्रिशन है ये कैसे होती है ऑर्गेनिजम्स में. चाहे देखो, ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं, ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. हम अब देखेंगे जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये क्या सभी जो ऑर्गेनिज्म में इनमें सेम है कि ये डिफरेंट है? नो, इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है it is different in different organisms. Different organisms have different modes of obtaining food. This means now modes of nutrition, or we can say ways of nutrition.
मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये होता है इट मीन्स मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड हासिल करते हैं, कैसे अपना फूड लेते हैं, कैसे कहाँ से लाते हैं, दैट इज व्हाट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. एंड बेटा इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है बेटा. और डिपेंडिंग ऑन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन और वी कैन से ways of nutrition or we can say methods of obtaining food by an organism. जो बेटा न्यूट्रिशन है it has been classified into two groups. First is autotrophic nutrition, second is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, auto means self. What does auto means? Auto means self and trophy means nutrition. This means autotrophic nutrition is simply self nutrition and hetero means others and trophic means nutrition. This means it is nutrition from others or we can say it is न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स. ठीक है, ये इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है. व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट आर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. और ये भी आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दिस मीन्स आपने सिंपली याद रखना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइज देयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. वो कहाँ से लाते, दैट्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. दिस मीन लेट मी टेल यू हियर व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसमें डिफरेंस भी आप देख सकते हो. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, in this type of nutrition organisms manufactures their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide, water present in the environment in presence of sunlight. दिस मीन्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें जो ऑर्गेनिज्म वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. लेकिन बेटा जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस. इसमें जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें जो ऑर्गेनिज्म है इसमें an organism that cannot make or synthesize its own food from simple inorganic substance like carbon dioxide, water as heterotrophs do, but they depend on, we can say these are in heterotrophic organism depends on autotrophs. और जो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक. दिस मीन्स जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसमें जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे, because they cannot make their own food. Second is जो autotrophic nutrition है इसमें क्या है, जो autotrophs है वो उनमें होते हैं photosynthetic pigments for trapping light. और we can say ये जो autotrophs ये कैसे अपना food बनाते हैं, they prepare their food from carbon dioxide, water in presence of sunlight. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, photosynthesis. लेकिन जो heterotrophs है they do not possess photosynthetic pigments. This means they cannot make their own food. और जो ये है बेटा these autotrophs how they prepare their own food, they convert light energy into chemical energy. Which light energy? Light energy कौन सी वो ट्रैप करते हैं, जो वो ट्रैप करते हैं सन से उनको उसको वो चेंज करते हैं किस में बेटा, केमिकल एनर्जी में. और जो ये है हेटेरोट्रॉप्स दे डू नॉट कन्वर्ट, दे कांट कन्वर्ट बिकॉज दे डू नॉट पॉसेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. दे कांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ये यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हो. अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपको डिफरेंस भी कभी आती है, डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको यही लिखना है. दिस मीन्स जो ऑटोट्रॉपिक्स है दे मेक देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. और जो हेटेरोट्रॉप्स है ये दे डोंट undergo the process of photosynthesis because they do not possess photosynthetic pigments. इसमें जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप याद रखोगे इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया. और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें एग्जांपल दे सकते हो हमारी अपनी खुद की ह्यूमंस बिकॉज वी डिपेंड ऑन
others for their nutrition. For our nutrition humans आते हैं इसमें, animals आते हैं, fungi आते हैं. This means we are heterotrophs. और जो green plants हैं वो क्या है बेटा? They are autotrophs. This means इससे हमें पता चला जो green plants है they make their own food. Non-green plants and animals cannot make their own food. They obtain food from, हम क्या खाते हैं? प्लांट्स भी, एनिमल्स भी. दिस मीन्स जो हेटेरोट्रॉप्स है दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. इंशाल्लाह tomorrow we will see what are different types of heterotrophic nutrition. That was about what is nutrition and what is autotrophic and heterotrophic nutrition. Thank you.